The government has convened an all-party meeting today ahead of the monsoon session of the Parliament beginning on Monday. During the meeting, the government will seek cooperation from all political parties to ensure the smooth functioning of both houses of the Parliament. Now remember, the monsoon session will be held from the 21st of this month to the 21st of the next month. Now this will comprise 21 sessions. Remember, the India Bloc parties held an online meeting yesterday to reach a consensus on issues that they would like to raise to corner the government. My colleague Prashant brings us more on this, but let's first have a look at the reactions. कल हमारी ऑल पार्टी फ्लोर लीडर्स की जो मीटिंग है उसमें जो आएंगे और उसके बाद जो स्पीकर साहब लोकसभा में और चेयरमैन साहब राज्यसभा में अलाउ करेंगे, उन सब मुद्दों पे सरकार चर्चा के लिए तैयार है। सरकार कुछ भी छिपाना नहीं चाहती है, कोई भी मुद्दा हो। पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रपति अमेरिका ट्रंप के 24 बयान, SIR बिहार कमीशन का, इलेक्शन कमीशन किस तरह लोकतंत्र को गिरवी रख रहा है, फॉरेन पॉलिसी चाइना के मुताबिक गाजा और पाकिस्तान के लिए, डिलिमिटेशन, फिर एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, वीमेन और माइनॉरिटी। कुल मिलाकर ये बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में देश के लिए चिंता व्यक्त करते हुए, चिंतित होते हुए और एकजुट होकर लोकतांत्रिक ढंग से, शांतिपूर्वक ढंग से हम चाहेंगे कि पार्लियामेंट चले। पार्लियामेंट में हम मुद्दे उठाएं, सरकार जवाब दे, जो लोकतंत्र की शान हो। महंगाई, बेरोजगारी महाराष्ट्र में जो हो रहा है, ये सारे इश्यूज हम उठाएंगे। ऑपरेशन सिंदूर, आपको याद होगा कि महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग हमने गवाए और पूना की 2 फैमिलीज है। वो जगदाड़े फैमिली की बेटी मुझे फोन करके पूछती है कि ताई, जिसने मेरे फादर की हत्या की, पिताजी की हत्या की, उन लोगों का क्या हुआ, उसको मुझे जवाब देना। वो लड़की न्याय मांग रही है कि मेरे पिता की हत्या किसने की, जवाब दो। तो सुप्रिया सुले को जाके पूछना पड़ेगा केंद्र सरकार को, जगदाड़े की बेटी को मुझे जवाब देना है। Well, Congress must have heaved a sigh of relief because, 24 parties of India Bloc attended this meeting, which was called to discuss the issues that are likely to be raised by the opposition parties in the coming monsoon session. In fact, Congress was represented by three of its top leaders, including Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge, which shows how much importance Congress attached to this meeting. But they would have definitely wanted all the other leaders of the India Bloc parties to attend this meeting, because Mamata Banerjee of Trinamool Congress, Akhilesh Yadav of Samajwadi Party and M.K. Stalin of DMK, they did not attend this meeting. They were these parties were represented by the other leaders like Abhishek Banerjee from Trinamool Congress, Ramgopal Yadav from Samajwadi Party and Tiruchi Shiva from DMK. So Congress must have wished that the top leaders of these parties must have attended this meeting. However, there is no doubt about the fact that just on the eve of the parliament session, Congress party did manage to bring almost all the constituents of India Bloc parties except Aam Aadmi Party, which had earlier announced that they will not attend this meeting, and in fact they have opted out of the India Bloc altogether. So Congress party did manage to showcase the unity among India Bloc parties, but they would have wanted that top leaders of their other constituents would have attended this meeting.